So good morning students. Today as I'm uploading the video, okay, after a long time, so we will discuss the theory that is a crystal field theory, that is the last part of the coordination complexes. Okay, we are going to discuss about this theory. So first of all, before proceeding to the detail of this theory, first of all we will discuss about the intro of the theory, that what is the need to bring this theory and why it is brought. Okay, so as in the last video we have discussed about valence bond theory. So when we are discussing about valence bond theory, we have discussed over there, first point we have discussed that in case of valence bond theory, some of the examples that include the ligands that are strong and some of the examples which include the weak ligands. Why it is so, it is not explained by valence bond theory, right? Another point, which second point which you have to keep in mind, that why some of the complexes in valence bond theory they are paramagnetic and why some are diamagnetic, that is not explained. Why some are low spin, why some are high spin, that is not explained by valence bond theory. And one example, that is of copper ammonia 4, that is forming a square planar complex, and that example is not elaborated by the valence bond theory. So as there are a lot of limitation regarding the valence bond theory, so due to that a new theory is developed by crystal field theory, that is developed by two scientists, that is H.bethe and V.Bleck. So these are the scientists which are working on the theory of crystal field. Okay, now what this theory says, this theory is having a different point of view as compared to the theory which is the valence bond theory. This theory, the crystal field theory, says that the metal ligand bond, okay, this is the metal, this is what, the ligand. The metal and the ligand bond in case of crystal field theory is what, that is ionic. The bond between the metal and ligand, that is the ionic bond. As per the ionic bond, what we can consider here, the metal that is behaving as electropositive in nature and the ligand that is behaving as electronegative in nature. Okay, so what will be there? It is having M positive, L negative, definitely. Okay, the bond is ionic. Now when the bond is formed, if metal will be positively charged, ligand will be negatively charged, then definitely ligand will donate. So as the ligand is negatively charged, what it will do, it will form the bond that will be the coordinate bond. It will donate its pair of electron, either it could have a lone pair or it could have a negative charge. Negative charge means a pair of single pair of electron, depend karta hai that it is having a 1 negative, 2 negative, whatever. Okay, so accordingly it will donate its pair of electron to the metal. So this bond is considered to be a ionic relation between the metal and the ligand. Whereas what is about the valence bond theory? Valence bond theory is different, the last theory which we have discussed. Okay, according to that theory, according to valence bond theory, the bond between the metal and ligand, that is purely covalent. Okay, that means formed by sharing. Definitely this point is what, that will be incorrect. It will be incorrect. Why it is incorrect? Because metal ligand bond, how it could be purely covalent? We already know that metal is a positively charged and the ligand that is a negatively charged. We have discussed even in the valence bond theory also, the postulate of the valence bond theory, that the ligand donates its pair of electron to the metal. So definitely this postulate could be wrong. But this theory says, what about crystal field theory? This is different from valence bond theory. It says that the metal ligand bond that is ionic in nature, the ligand that is behaving as a negatively charged, metal is behaving as a positively charged. So the ligand will donate its pair of electron to the metal, which result in the formation of a coordinate bond. Okay, the bond that is donated by arrow. So this is the concept of crystal field theory. Okay, the first thing you have to keep in mind regarding crystal field theory, the bond between the metal ligand, that is what purely ionic in nature. Okay, now another thing you have to keep in mind, the ligand.
Okay, now next point you have to keep in mind the ligand. Ligand is behaving as point charge. This is the another point you have to keep in mind. The ligand that will behave as a point charge, that means it is as a negatively charged. ये एक प्रेफर करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. सो व्हेन इट अप्रोचिंग द मेटल, ओके, व्हेन इट इज अप्रोचिंग द मेटल, definitely ligand has to approach the metal, okay, because metal is positively charged. Ligand have to donate the electron, form the coordinate bond. So when it is approaching the metal, that is behaving as a point charge. It is behaving as a charge. Now what will happen, you already know. If I'll talk about any of metal, okay, any of metal we will discuss. Definitely what will be there, that is having electron, okay, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होंगे. उसके it contain electron in which orbital, that is in the d orbital, okay. अब it depend कि ligand जो आप approach कर रहा है, that is strong or weak, it will depend, but metal definitely contain electron in its d orbitals also. So when the ligand is approaching as a point charge, this is behaving as a point charge, it is having a negative charge. Metal that is also containing the orbital, which orbital, d orbital, that is having what, electron in it. D orbital having electron, this is a negatively charged, electron is negatively charged, this is negatively charged. So what will be there, if this is the picture of the d orbital, okay, and this is the ligand, so what will be there, they will cause repulsion. What, the electron that are present in the orbital. One thing more, if as this we have discussed even in the 11th standard, that these all d orbitals, they are of equal energy. As per rule, what will be there, the ligand can approach any of the orbital here, as all the orbital are degenerate orbital. Degenerate means they are having the same energy level. So accordingly, the ligand can approach any of the orbital. When the ligand is approaching any of the 5d orbital, you already know there are 5d orbital, dx square minus y square, dz square, dxy, dyz and dzx. 5d orbitals are there. So ligand is approaching that. Okay, hope so you are understanding me. So ligand is approaching that, then ligand can donate electron to any of the orbital. Depend करता है कि वो orbital खाली होगा तो, okay. अब क्या होगा, when ligand is approaching, the electron जो कहीं पड़े होंगे इसमें, okay, पांचों के पांचों d orbital तो खाली नहीं होंगे. So what will be there, it will feel repulsion. अब ऐसी रिपल्शन कब होती है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट octahedral complexes. Octahedral, you know, when the 6 ligands will approach the central metal atom, that complex will be known as octahedral complex. So we already know I have made the shape of the d orbital. Don't consider this black dots, these are donated as a ligand, okay. So as I have already told you, these are behaving as a point charges. So you can see here dz square, dx square minus y square. Here the orbitals, they are present along the axis, okay, that is present along the axis. What about this one, dxy, dzx and dyz? In this, all the orbitals are present in between the axis, okay. One is on the axis, another one is in between the axis, one, and here that is totally in between the axis. So we can say here that these only dz square and dx square minus y square, these are the only two orbitals in which the in which the orbitals are present along the axis, okay. Orbitals, they are present along the axis. Now what will happen, मेटल ने अपना ऑक्सीडाइज किया, उसने जो भी हम करके आए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. अब नाउ द व्हाट विल बी देयर, मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे. नाउ व्हाट विल बी देयर, लाइगेंड हैज़ टू अप्रोच. लाइगेंड अब डोनेशन के लिए अप्रोच करेगा जैसे ही मेटल को, ठीक है. तो लाइगेंड विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, आई हैव शोन देयर. सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, आई एम रिपीटिंग अगेन, in case of octahedral, what crystal field theory says, in case of octahedral, the ligand that will approach along the axis. See, मैंने ligand किसके ऊपर बनाए, axis के ऊपर बनाए. मेरे पास 3 axis, z y x. So ligand, 6 ligand है, so they are approaching from the axis. And orbital, they are also, कौन से 2 orbital along the axis पड़े हैं, dz square and dx square minus y square, they are present along the axis. So when
this will approach to the orbital, they will repel each other. As I have already told you, this will having negative charge, definitely contain some of the electron, this will have negative charge. So अब जब 5 d ऑर्बिटल मेरे पास पड़े हैं, तो जब लाइगेंड अप्रोच करेगा तो जो तो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर. ड्यू टू रिपल्शन एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी विल इंक्रीज, और इन तीन की होगी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस. सो डिपेंड अपॉन दैट. सी, ये एक एनर्जी लेवल होगा जब 5 डी ऑर्बिटल न्यूट्रल पड़े हैं, अभी लाइगेंड ने अप्रोच नहीं किया. ठीक है, यहाँ पे जैसे लाइगेंड ने अप्रोच किया, पांचों के पांचों को ऑर्बिटल को लाइगेंड 6 के 6 लाइगेंड जैसे भी अप्रोच करेंगे. ठीक है, अब होगा क्या, जैसे अप्रोच करेंगे पहले तो पांचों के पांचों की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ऑल ऑर्बिटल्स विल फील लिटिल बिट रिपल्शन, है ना. ये भी तो रिपल्शन फील करेंगे, 3 के 3 ये भी तो रिपल्शन फील करेंगे. बट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, as these two ligand, these two orbitals, they in this case these d orbitals too, they are having the along the axis, so accordingly इनको रिपल्शन ज़्यादा फील होगी. अब जब रिपल्शन ज़्यादा फील होगी तो क्या होगा, दे विल इंक्रीज. ये इसका एनर्जी लेवल था, ठीक है, ये उससे 3/5 डेल्टा नॉट. ये डेल्टा नॉट क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ. तो मतलब उसका 0.6 जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा नॉर्मल एनर्जी लेवल ऑफ द डी ऑर्बिटल. ठीक है, जबकि जो 3 ऑर्बिटल हैं दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, सो इनका जो एनर्जी लेवल है वो इतना डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग दैट मच रिपल्शन एज दीज 2 ऑर्बिटल्स आर फीलिंग. ओके, सो इनका जो एनर्जी लेवल है ये डिक्रीज हो जाएगा बाय -0.4 ओवरऑल. कीप इन माइंड, ओवरऑल क्या कहता है, CFT वी यूजली शॉर्ट नेम ऑफ दिस वन इज CFT. सो ओवरऑल CFT क्या कहता है, द ओवरऑल एनर्जी लेवल ऑफ द डी ऑर्बिटल दैट विल नॉट वायलेट. ओके, जैसे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अकॉर्डिंग टू दैट बैरी सेंटर रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, एज पर बैरी सेंटर रूल, ठीक है, कहते क्या होता है, जो ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी है वो वायलेट नहीं करती. ओवरऑल जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी रहती है उतनी है, इसकी बड़ी उतनी ये तीनों की कम हो गई. ठीक है, अब ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, देखो यहाँ पे इक्वल एनर्जी पे थे, यहाँ पे स्प्लिट हो गए. अब जैसे ही स्प्लिट हुए देखिए तो इनके बीच में ये एनर्जी गैप आ गया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा. ठीक है, ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड डेल्टा नॉट सी लाइक दिस, डेल्टा नॉट. ओ रिप्रेजेंट व्हाट, O represent what, octahedral. Okay, after that I have written these 2d orbital which are present along the axis, that is EG. G term E like this, EG. So G terms represent G rate. Okay, that is beyond your syllabus, we will not discuss that. Even CFT, after CFT we are having 2 more theories. Okay, we are having 2 more theories, MOT and ligand field theory. Molecular orbital theory है हमारे पास, ligand field theory है, but that's not the part of syllabus because this theory also not explain all the concept, but your chapter finish here only. Okay, so after that this will have EG orbital. Okay, these are named as E orbital and these are named as T2. Now G word is used here, G rate. Okay, G rate word is used in case of octahedral complexes and delta naught ये represent कर रहा है, इसको बोलते हैं हम crystal field splitting energy. Okay, this is known as CFSE, crystal field splitting energy, which represent the splitting of the d orbital. Okay, hope so it would be clear to you. I am again repeating that the overall energy concept that will not violate. Okay, but what will be their energy, यहाँ पे जितना increase होगा उतना ही यहाँ पे कम हो रहा है. ठीक है, so you can say you can even write 2.5 delta naught or 3.5 delta naught. Okay, if you don't want to write, this is C, this is plus 0.6 and this is minus 0.4. Okay, so this is the concept of octahedral splitting. Hope so it would be clear. Please, I am repeating again. See, I have said in case of octahedral where 6 ligands are present, ligands, I am repeating again, in case of octahedral the ligands, they will approach along the axis, and along the axis we are having 2 orbitals and those are what, dz square and dx square minus y square, and 3 orbitals they are present in between the axis. उसके लिए ligand का approach उतना strong नहीं होता है because they are approaching along the axis, that's why इनका energy level कम होता है.
but this will be opposite in tetrahedral. Next one, tetrahedral. Okay, now see, whereas in case of tetrahedral you can see, okay, अब यहाँ पे देखिए ये डिजोनेट लेवल था, ऐसे ही पांचों की ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे थी. अब टेट्राहेड्रल में फर्स्ट थिंग आपने क्या याद रखनी है, टेट्राहेड्रल में लाइगेंड कितने होंगे टोटल, 4. ठीक है, टेट्राहेड्रल में लाइगेंड टोटल कितने होंगे, हमारे पास 4 लाइगेंड होंगे, जबकि ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 6 थे. जितने ज़्यादा लाइगेंड होंगे, याद रखें मेरी बात, मोर द नंबर ऑफ लाइगेंड, व्हाट विल बी देयर, मोर विल बी द स्प्लिटिंग, क्योंकि ज़्यादा लाइगेंड जब अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे. अब यहाँ पे लाइगेंड कितने हैं, 4 हैं. ठीक है, अब क्या होगा, डिजोनेट लेवल है. ओके, अब जैसे ही लाइगेंड ने अप्रोच किया, अब जब टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं, यहाँ देखो ऑर्डर रिवर्स हो गया. यहाँ पे क्या है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डाउन है. ठीक है, ई ऑर्बिटल जो हमारे थे, जो वहाँ ऑक्टाहेड्रल में हमारे अपर लेवल पे थे, वो यहाँ पे नीचे हैं, जबकि जो जो हमारे 3 ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस थे, वो देखिए इन T2 ऑर्बिटल ये यहाँ है. ठीक है, एनर्जी गैप देखिए वही है, यहाँ पे 2.5 डेल्टा टी TCT टेट्राहेड्रल. ओके, और इसको आप और क्या लिख सकते हैं, प्लस 0.4, यहाँ पे होगा माइनस 0.6. इसका कुछ एनर्जी लेवल होगा, दैट इज़ नॉट वायलेटेड. ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, अब ये आप कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें जो ये थे ये ऊपर कैसे चले गए और ये नीचे क्यों आ गए, है ना. ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, यहाँ पे देखिए, जब मैं बात करती हूँ ऑक्टाहेड्रल की, तो लाइगेंड जो मैंने बोला, दे आर अप्रोचिंग अलॉन्ग द एक्सिस. मैंने जब ये टॉपिक फिनिश कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने आपको दोबारा एंड में वही लाइन बोली थी, द लाइगेंड्स दे आर अप्रोचिंग along the axis, but in tetrahedral the ligands they will approach from in between the axis. CFT ने बोला कि भी जो जब टेट्राहेड्रल की बात होती है तो लाइगेंड इन बिटवीन अप्रोच करते हैं. अब इन बिटवीन में तो मेरे पास 3 ऑर्बिटल पड़े हैं. ठीक है, इन बिटवीन में तो 3 ऑर्बिटल पड़े हैं. ओके, अब जब ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पड़े हैं, इनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जो 2 ऑर्बिटल हैं जो अलॉन्ग द एक्सिस पड़े हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा. क्लियर है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी वर्ड हम नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे यूज़ करते हैं. वो क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस. इवन मैं आपको ये भी बोलूँगी कि यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे भी है ना, जब हम स्क्वायर प्लेनर, दिस इज़ अबाउट टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी आती हैं, सो वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हैं कि इवन स्क्वायर प्लेनर में फर्दर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, वो कैसे होती है, दैट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस. सो वी विल नॉट डिस्कस दैट. यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर का कंसेप्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर रही CFT. ठीक है, सो हमारे पास 2 कंसेप्ट उसने एक्सप्लेन किया, एक तो ऑक्टाहेड्रल का, एक टेट्राहेड्रल का. ओके, होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू. एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारे पास, वो भी मैं आपसे बात करूँगी, पहले यही फिनिश कर लें. ठीक है, ओके. उसके बाद देखिए, हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है. व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज गिवन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, अब बेस्ड ऑन द स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग के बेस पे उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक हमें सीरीज़ दे दी. ठीक है, उसने हमें एक सीरीज़ दी विच विल टेल अस, उन्होंने स्प्लिटिंग के बेस पे इसको डिसाइड किया कि जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, कहते उतना ज़्यादा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होगा. जितनी स्प्लिटिंग कम है, मतलब लाइगेंड वीक है. जैसे आपको पता है कि इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी आर सेइंग दैट NH3 अमोनिया एंड साइनाइड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, हम बोलते हैं, राइट. इफ आई से F नेगेटिव, दैट वी यूजली से दैट इज़ अ वीक लाइगेंड. व्हाई इट इज़ सो, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन, बट दिस थ्योरी एक्सप्लेन that is based on the splitting, that if there will be more splitting, then what will be there, the ligand will be strong. If the splitting is less, that means crystal field splitting energy will be less, then the ligand will be weak. So based on that a theory series is given to you which you have to keep in mind. देखिए ये जो है ये weak ligand है. अब ये weak से strong की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, पहले आपने इसको याद कैसे करना है, I have made a rhyme, hope so it would be helpful to you. Okay, because आपको ये याद रखनी पड़ेगी if you have to solve the questions. सो ये देखिए, यहाँ पे आपने इसको लर्न करना है. आई बहार बिहार, ओके, सुन चंदा साथ नृत्य फरमाएं, ओडिशा ओमान ऑकलैंड का पानी नागरिक देवता पाएं, अम्मी इन्हें डायपर और पहनाएं, नित्य कोरोना को ना
बुलाएं। सो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से कि आप जो हैं ये सिंबल्स लर्न करने के लिए आपको ये थ्योरी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आपको ये डायरेक्ट सीरीज़ आपको ये लर्न करनी है, ये देखिए लाइक दिस, तो डेफिनेटली आपको ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो दैट्स व्हाई आई मेड दैट। ओके, अब बात करूँ मैं इसके अलावा, तो ये देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ, अब मैं बोलूँ कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन है, तो ये मैं बोलूँगी Br नेगेटिव अच्छा लाइगेंड है एज़ कम्पेयर टू I नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी इससे ज़्यादा। लेकिन मेरे जो मोस्टली स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर मैं बात करूँ, ये तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना कि ये इससे अच्छा लाइगेंड इससे अच्छा लाइगेंड है। मोस्टली जो हमारे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है जिसमें पेयरिंग होती है, ठीक है, मोस्टली जो हमारे देखिए यहाँ से शुरू होते हैं, पिरिडिन, अमोनिया, EN, डाइपिरिडिन, ऑर्थोफिनाइल, नाइट्रेट हो गया, देन साइनो हो गया, देन कार्बोनिल सबसे अच्छा लाइगेंड है देखिए, ठीक है। सो ये एक्सप्लेन किया था, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी थी CFT ने, किसके बेस पे दी थी, ये स्प्लिटिंग के बेस पे दी थी। तो आप देखिए, आप इसको लर्न कर लें, आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। इवन अब यहाँ पे मैंने आपको, जब मैं करवा रही थी टॉपिक, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। सो क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक बहुत बार रिपीट हुआ है, वो भी बोर्ड में, दैट वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस has less splitting than octahedral, ठीक है। ओके, सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई डेल्टा T इज़ 4/9 डेल्टा नॉट। ओके, वाई इट इज़, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो इसका आंसर यही होगा, फर्स्ट आंसर आप इसका लिखोगे, इट हैज़ लेस नंबर ऑफ लाइगेंड्स। ओके, सेकेंड, in this case ligands approach in between axis. Okay, in between of axis, that means none of the ligand approach ऑर्बिटल डायरेक्टली, ठीक है। इन बिटवीन तो वो कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन में माइट बी सम जो ऑर्बिटल से उनका मतलब रिपल्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं फील कर रहा ऑर्बिटल। सो नन ऑफ द लाइगेंड अप्रोच ऑर्बिटल डायरेक्टली, ओके, और स्ट्रांगली अप्रोच नहीं कर रहा, कुछ भी लिख सकते हो। सो बेस्ड ऑन दैट इसकी जो स्प्लिटिंग है वो कम होती है। सो ये हमारी स्टार्टिंग है CFT थ्योरी की। इसके बाद भी CFT के कुछ और कंसेप्ट है कि अब मैंने ये तो बता दिया कि ये स्प्लिटिंग ऐसे होगी, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। अब जब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो कैसे फिल करने हैं, ठीक है, हमारे पास अब अगला कंसेप्ट होगा पेयरिंग एनर्जी का। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो आप इसको करें, लर्न करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।